were picked up after a peaceful protest that you brought here. And you see how the ED is working. You have Ajit Pawar, Hemanta Biswa Sarma, Suvendu Adhikari, Chirag Rane. How come the ED doesn't pick them up? How come the ED doesn't pick them up? Why? Two minutes, everyone, just 2 minutes. It's the Kirti Azad. It's the Kirti Azad. Yes, so let them be. We have also taken the matter to the court, to the ED. What does the ED think it is? The ED has become a political tool for loot and espionage of the BJP. एक सेकंड You will be quiet. एक सेकंड प्लीज वेट हमारा नाम प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग हम लोग 1 घंटा Kirti Azad, Mahua Moitra and Shatabdi Roy will address the media. Kirti Azad, Mahua Moitra. आप लोगों ने माइक जाम करो यार. आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह जी के ऑफिस के बाहर ईडी के रेड के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे. उस प्रदर्शन में हमने शांतिपूर्ण रूप से थे. आपने उसके विजुअल्स देखे हैं. हमको उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं. हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है. अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे. अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है. नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है. और हमारे बंगाल के एक नेता है सुवेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था. क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके. और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता के सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है, उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा. हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना, लेकिन यह जो भी किया गया है, जो भी रेड हुआ है, वह रेड उचित नहीं है, अनुचित है. जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है. और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं और आकर हम पर ब्लेम लगाते हैं. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले. इसके बाद अंग्रेजी में महुआ मोइत्रो और बंगला में शताब्दी रॉय. महुआ जी आए शताब्दी আমরা বাংলার আর শতাব্দী দিকে আলাদা করব. This morning, hello everyone. As you can see, we have been detained. And brought to the Parliament Street police station. We were protesting very peacefully this morning. A group of us 8 MPs outside the Home Ministry, the office of the Honorable Amit Shah, who yesterday most shamelessly, after being unable to fight us on the ground politically in Bengal, sent his enforcement directorate, the extortion directorate, to loot and plunder and do political espionage on our party and steal our party's election documents and election data. And on a 7 to 10-year-old case, what were they doing? Sleeping till now? That is number one. And they brought us here, they dragged us in prison vans and brought us here in a peaceful protest. We are public representatives. We are not criminals to be brought here like this. The second thing is, you see some names here on this poster. The names are Ajit Pawar. The Prime Minister himself said 70,000 crores is the scam that he's been. Where is he today? Deputy Chief Minister. Where is he today? In Maharashtra, running the government with the BJP. Second name, Hemanta Biswa Sarma. He was in the Louis Berger scam and he was supposed to be in jail, said Mr. Amit Shah. Where is he today? He's Mr. Mastermind for the Northeast, for the BJP and Chief Minister of Assam.
What name do you see here after that? Suvendu Adhikari. Suvendu Adhikari was caught on camera taking money. Caught on camera. Where is he today? Leader of the opposition in Bengal. Who do you see here? Narayan Rane, who's been accused of numerous scams. Where is he? In the Maharashtra government. So why is the ED selectively only for the opposition and a washing machine for those that the BJP like? Today at 2 p.m. in the afternoon, our leader, the Tigress Mamta Banerjee, nobody else has the guts. And today, nobody else, no opposition leader had the guts to do what she did yesterday. While the ED's illegal raid was going on, Didi went into the premises and she tried and saved our party's documents and our party's information. She's leading a march today from Jadavpur 8B bus stand to Hazra More, and all the public of Calcutta will join her, and we will show the BJP that these tricks on the eve of an election will backfire. But the protests continue in the national কালকে ইডি যে ব্যবস্থা করেছে ওদের সব সময় ইলেকশনের সময় কেন মনে পড়ে তার আগে কোথায় থাকে ইডি সিবিআই কে ব্যবহার করছে এবং যেভাবে ব্যবহার করেছে যদি মমতা ব্যানার্জি যেভাবে প্রোটেস্ট করেছে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা অপোজিশন লিডারকে এভাবে প্রোটেস্ট করা উচিত তবেই বিজেপি বুঝবে যে তারা কি করছে এবং ভারতবর্ষের মানুষ কি চাইছে আজকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রোটেস্ট করছি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে ওরা কি ব্যবহার করছে এবং অজিত পাওয়ার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা There are several cases of many other leaders who are now aligned with the Bharatiya Janata Party. We have been that off. Why should the opposition not protest? Ma'am, will the protest continue in the All right, so you heard that from TMC leader Protests were held in every block in West Bengal, and it will continue. in Delhi? Shatabdi Roy, Mahua Moitra. Right, so these in fact were live images coming in at this point in time with TMC leaders who are now saying that why should the opposition not protest, because this is a clear politically motivated case is what the refrain really is. You heard from Mahua Moitra and Shatabdi Roy of the Trinamool Congress there saying that this will only escalate even further. These are protests that were held by the TMC earlier today, visuals on your screens after detentions, and they say that this will only escalate even further. Even remember, as the Enforcement Directorate has sought relief and said that they were criminally intimidated.